Morning, dear students. Today we will finish our chapter, The Freedom Struggle. In the last lecture, we had read about Simon Commission and how Lala Lajpat Rai was succumbed due to the injuries. And now we will start from new leaders. There were many new leaders of the freedom struggle during this period, such as Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Abul Kalam Azad, Sarojini Naidu, Motilal Nehru, Govind Ballabh Pant, and Jawaharlal Nehru. All these leaders joined the freedom struggle afterwards. Civil disobedience movement. In 1929, at Lahore, the Congress declared their demand for complete independence और पूर्ण स्वराज 1929 में लाहौर में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड को डिक्लेयर किया मींस उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की इंडिया में. दे सेड नाउ वी डोंट नीड ओनली रिफॉर्म्स, वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए इंडिया में. The British introduced a tax on the salt production in India. और उस टाइम पर ब्रिटिश ने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया सॉल्ट प्रोडक्शन पर, नमक बनाने पर. गांधी जी डिमांडेड दैट सॉल्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड विदाउट पेइंग एनी टैक्स फॉर इट. एंड गांधी जी ने डिमांड की कि सॉल्ट पर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्रोड्यूस्ड विदाउट पेइंग टैक्स. He started the civil disobedience movement in March 1930 और 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं. मीन्स वेरी पोलाइटली टू डिसोबे. He disobeyed that British had introduced a tax and he said we will not obey their rules and we will not pay the tax. And he started civil disobedience movement in 1930 with the Dandi March. He started this with Dandi March. Gandhi ji along with his followers led a procession from the Sabarmati ashram in Ahmedabad to Dandi to break the salt law. और इसके लिए गांधी जी ने एक प्रोसेशन स्टार्ट किया, एक पद यात्रा स्टार्ट की. मीन्स वो पैदल चले साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में था वहाँ से लेकर वो डांडी तक पैदल गए टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. और वहाँ जाकर उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया. अपॉन रीचिंग डांडी गांधी जी पिक्ड अप सॉल्ट फ्रॉम द सी एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ. और डांडी पहुँचने के बाद गांधी जी ने वहाँ से सॉल्ट उठाया, जो सी कोस्ट था वहाँ से सॉल्ट उठाया अपनी मुट्ठी में एंड ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ. क्विट इंडिया मूवमेंट. In 1942, the Congress under the leadership of Gandhi ji started the Quit India movement. 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया और ये गांधी जी की लीडरशिप में ही स्टार्ट हुआ. गांधी जी गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई. और अब गांधी जी ने लोगों को कहा करो या मरो, डू और डाई. He asked the people to fight till the British left our country. और उन्होंने लोगों को बोला कि हमें तब तक फाइट करना पड़ेगा जब तक ब्रिटिश हमारी कंट्री को छोड़कर चले नहीं जाते. The British tried to crush the movement. ब्रिटिश ने इस मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश की. क्विट इंडिया मूवमेंट मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन. इसको क्रश करने की, इसको अनसक्सेसफुल करने की कोशिश की. दे अरेस्टेड गांधी जी एंड अदर लीडर्स. और उन्होंने गांधी जी और दूसरे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया. सुभाष चंद्र बोस. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस इमर्ज्ड एज अ पावरफुल लीडर. फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरिंग सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक पावरफुल लीडर बनकर उभरे. He formed the Indian National Army in 1943 to fight against the British. And 1943 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई ताकि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ सकें. The Indian National Army
also had a women's regiment known as the Rani Jhansi Regiment, और इंडियन नेशनल आर्मी की एक विमेंस रेजिमेंट भी थी, मीन्स उस रेजिमेंट में सारी विमेंस थी, सारी लेडीज थी. So Rani Jhansi Regiment it was called. Subhash Chandra Bose gave the famous slogans, "Give me blood and I will give you freedom." Means he said, "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा." Means he invoked people, he just motivated people to give away their life for freedom. And another slogan he had given, Jai Hind. India wins freedom. After the end of the Second World War in 1945, the British realized that they could no longer suppress the freedom movement. So when there was end of Second World War जब ख़त्म हुआ 1945 में, तो ब्रिटिश को ये रियलाइज हुआ कि अब वो ज़्यादा टाइम तक इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस नहीं कर सकते थे, दबा नहीं सकते थे. सो दे एग्रीड टू लीव इंडिया एंड ट्रांसफ़र द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू द इंडियंस. तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें इंडिया छोड़कर चले जाना चाहिए, एंड they transferred the power of the government to the Indians. However, this led to the division of the country into two parts, India and Pakistan. But before giving freedom to Indians, they did this. They used the policy of divide and rule here also. And during the when we got freedom, with that we got two parts of India also, and India was divided into two parts, India and Pakistan. India became independent on 15th August 1947. 15th August 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया. वी बिकेम इंडिपेंडेंट. जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, और राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने आफ्टर इंडिपेंडेंस. दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. हैव अ गुड डे चिल्ड्रन.